Good morning, dear children. We are discussing History Chapter 1, Class 7. In our previous video, we have discussed that Indian history is divided into three parts: ancient history, medieval history, and modern history. After that, we have discussed that in Europe, medieval age started, in fact, from 5th century only, but in India, it started from 8th century AD. AD means after death. After Jesus Christ's death, this period is known as after death, means AD. And AD से पहले एक और चीज़ आती है AD and BC. BC is termed as before Christ. So these dates are related with the birth and death of Jesus Christ. So before Christ, BC is termed, and after death AD is termed. Then we have seen that medieval age is divided into two periods: early medieval period and later medieval period. Now today we are going to discuss which European traders came in India and what they started. Traders mainly came for what purpose? So Europeans began direct trade with Indian seaports till the end of 15th century. First of all, Portuguese sailors, Portuguese traders who came to India, and after that English, Dutch and French traders came in India for the purpose of trade. ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो सारे फॉरेनर्स थे वो इंडिया में आए. By the mid-18th century, the British beat the French to be the dominant political force in India. इन चारों में आपस में वॉर्स होते रहते थे, ओके, फाइट्स होती रहती थी. एंड फाइनली ब्रिटिशर्स वॉन. जो इंग्लिश थे, जो यूके से, ब्रिटेन से आए थे, तो वो ब्रिटिशर्स, एंड दे बीट पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच इन द वॉर. ओके, एंड इंग्लिश और ब्रिटिशर्स बिकेम द मेन पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया. सो दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज. ओके, वो वहाँ से स्पेशली आफ्टर 1757, ठीक है, 1757 के बाद से जो पीरियड होता है वो कहा जाता है आपका मॉडर्न एज. ओके, और उससे पहले का आपका 700 AD टू 1750 कह लो. कुछ लोग 1750 कहते हैं, कुछ 1757 कहते हैं. सो 1750 के बाद वाला जो पीरियड है उसको मॉडर्न एज कहा जाता है. Now let us see what is the importance of geographical knowledge. If you have good geographical knowledge of any other country also, including your country, then what will be the importance of that particular thing? So it especially maps helped to understand a region better. Okay, आप मैप के थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को बहुत अच्छे से आप स्टडी कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो. Geographical features of a region and region's location with respect to other regions explains why a region prospered or remained isolated or was invaded frequently. कि किसी एक पर्टिकुलर शहर को, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को क्यों बार बार इन्वेडेड किया गया, मीन्स क्यों बार बार उस पर रेड की गई, क्यों उसे बार बार लूटा गया, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, उसको क्यों वो प्रॉस्पर्ड हुआ, क्यों उसने बहुत ज़्यादा राइज किया, क्यों उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज प्रॉस्पर हुए एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुई, और कौन कौन से ऐसे रीज़न थे जिसके कारण कोई एक पर्टिकुलर एरिया आइसोलेटेड हो गया. ओके, वहाँ कोई भी बिजनेस करना नहीं चाहता था. सो नाउ कार्टोग्राफी एंड मिडिवल एज, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बोथ द कंसेप्ट. कार्टोग्राफी और मैप मेकिंग वॉज अननोन टू एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में कार्टोग्राफी जो था वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड क्रिएटेड द नीड फॉर एक्यूरेट मैप्स. The Arabs and the Europeans who undertook joining journey over land and sea developed cartography, and India was instructed to cartography by the Arabs and the Europeans. और इंडिया में जो अरब्स और यूरोपियंस थे उनको कौन
इंट्रोड्यूस करता था उनको अरब और यूरोपियंस करते थे. नाउ लेट अस सी द Al-Idrasi and upside down map of which was given by Al-Idrasi. So this we have already seen, and Al-Idrasi and one French cartographer both have given map for India, but the later one, which means French cartographer map, is presently still we are using. So all the medieval maps of India were drawn by sailors who were more familiar with the coastal regions. So sailor को सबसे ज़्यादा मैप्स का काम होता था, and they were using the maps most probably. Hence, these maps show coastal areas in more detail than the interior regions. Now let us discuss which were the scholars who visited in medieval period. So first was Al-Biruni. He was famous Central Asian scholar. So he came to India and mastered Sanskrit and translated some Sanskrit text into Arabic. He also wrote a book called Kitab al-Hind on India. So he was a writer also, and he wrote a book. And another scholar came to India was Ibn Battuta. He came to India from Tangier, Africa in the 14th century. His work Rihla describes his travel in India. Therefore, their writings give us valuable geographical location on medieval India. Now the remaining chapter we will be discussing in our next video. Till then, goodbye, stay safe.